أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Traveler, or we are just like on a transit. There was a time you were in the womb of a mother, maybe for 9 months or less than that or more than that. After that, we are born, we came into this world. We are here for that age, maybe 50, 60 or 70 or 80. But our final day, or maybe night, or a time, is been written by Almighty Allah when we're going to leave this world. After these 50, 60 years of this living in this world, we have to go, we'll be transferred into our grave. We'll be left there, we'll stay in our grave for certain years. After that, the trumpet will be blown, and we'll be resurrected on the day of judgment. And on the day of judgment, from there, Almighty will make decision for you and I, either we are going to paradise or we are entering into hell. There is two places there. So I said we are here for us to learn a lesson, and we pray to Allah, supplicate in front of Allah, that Almighty Allah forgive all her sin and elevate the status and grant patience and sabr to the family. मोहतरम मुकर्रम सामीन इकराम, जिंदगी की हकीकत में और आपके सामने है. इससे मुझे और आपको सबक हासिल करनी है. सबक इस बात की है कि वक्त था इंसान जिंदा थी इस दुनिया में आपके साथ चलता था, फिरता था. इससे भी लोग मेरा आपके दादा दादी जो मेरा आपके साथ में थे, लेकिन अब दुनिया के अंदर में मेरा आपके साथ नहीं है. ऐसे ये खातून जो अपने कफन के अंदर में मलबूस है, ये मेरा आपके लिए एक लेसन देकर जा रही है कि लोगों, जिस तरह मेरा भी इंतकाल हुई है, तुम्हारा भी वक्त आएगा, तुम्हारा भी इंतकाल होगा, तुम्हारा भी इस दुनिया से गुजरना होगा. और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक के अंदर बयान फरमाया that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said in a hadith, has mentioned two things. Hasibu qabla an tuhasib, take account of yourself before Almighty Allah take account of yours on the day of judgment. Second thing he said, always remember about death. Always remember about death. Death is a reality, but we tend to forget about it. We only remember about death when our close friend or a close relative leaves us forever and ever, that she or he won't return again. Only from that time we remember about death. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, he used to remember about death frequently. There in salah, even my prayer, when I make salam on my right hand side, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam is saying, I don't have that time, I don't know, I have that time that I can make salam on my left or no. अल्लाह मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी के मुहासबा करने के अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए. और दुआ फरमाए अल्लाह इस मरहुमा की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, इनकी दरजात को अल्लाह बुलंद फरमाए. हम और आप इनके लिए दुआ करें. इंसान जब गुजर जाता है, मेरा आपके लिए वो उसको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कि हम और आप उनके लिए दुआ करें. इसलिए हम और आप जब भी कभी जनाजा के अंदर में हम और आप आते, तो कम से कम सूरह इखलास, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद 3 मरतबा एक इंसान पढ़ेगा, तो अल्लाह एक कुरान का अजर अल्लाह उनको नसीब फरमाए. तो जनाजे के अंदर में हमारा अपना तस्बीह को लेकर आए, कम से कम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर हमारा पढ़ेंगे, तो इसका अजर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको नसीब फरमाए. So I was saying that we are a traveler in this world. That is reality. Kami natural gini marama ni ado chilo mena signin dai. We was saying that bagali weekend nanondam bola hindi liburo bro. Nambula sila weekend na kalu
na isul-isul ni kalu nambul. Ginambul endel ni buro-buro gwendo nambul leke sam. Nambul bagay tulungan na singa. Do na singa salak ko nanoa sawati. Inasin listal may. Nambul endel ni buro-buro bagay ngay tulungan na singa. Do na singa sawati ut. Inasin listal may. Endo na singa mataka. Pakindo to sini kilata na kento na reda na dila ni singa mataka sisa. Do na singa sawati. Endo na singa na mataka. Isabo nga endo na singa dam. Niku. Menda bakaro ta kanon nambula endel ni buro-buro kon nambula leke sam. Kareda na ngone sutu bulan nga bali lewat siya dua si rona awasa samatan. Yung namat ini sintu ni beken na ngona la kumikin. Yung namat indo na kandi na. Naka menda bakam boden del boro namat indo na singa na to bikan. Ni simbel la kumay namat yo ken na menda bakaro ta kanon nambula taw mundo. Kasi ngito nga na bakin do baka tungan na transit mo. Dungan na transit to lagot sikumen ko. Nakalo, eba kambuli kan dabula wastu kan dali boro-boro ko achia, okay na nangon na lakumay nangon ni mate na list talaga nakalo. Namat ya baka ngayon doon na wabo. Baka nga doon na wabo. Bita mata ka na may takos ta ka na wabo ya, may gili sota patay, sota pata nakalo. Pinambulan ko, kung sinipikin na nakalo, mendambulan ta ka ng bulan ko, mendamulikin na boss na nikalo. Success is that person who live his life or her life according to the command of Almighty Allah and follow it to the way of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has made mention. So for us, we have to prepare. Life in this world is very short. Today, as I said, today we are here, tomorrow we are gone. We came alone, we're gonna go alone. A very good saying in English goes, it doesn't mean how many latest car you got, or how big the house is, or how big a bank account is, but remember the size of your grave will remain the same. The size of your grave will remain the same. It was written on top of one of the grave. Normally we visit the grave, but unfortunately when you go to the grave, we don't talk about death. Besides death, we talk about everything. The grave is such a place for you to remember. For us to contemplate, for thinking that one day people are going to come and leave us in this same graveyard. It was written on top of the grave that don't look shocked at this side. Is manzar ki taraf taajub se na dekho. Don't look shocked at this side. Yesterday I was in your place, tomorrow you will be in my place. There's no doubt about it. That's the reality. इस मंजर की तरफ आप तहज्जुब से ना देखो, इसलिए कल तक मैं तुम्हारी जगह था, आइंदा कल तुम मेरी जगह पर आओगे. So you have to please Allah. Almighty has mentioned in the Quran, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةِ لِيَبْلُوَكُمْ, that I have created life and death in this world so that I can test you. मैं तुम्हारा इम्तिहान लूं कि तुम जो अपनी जिंदगी को कैसे अपनी मनमानी जिंदगी गुजारे या मेरे अहकाम और हुक्म पर. अल्लाह मुझे और आपको इससे सबक हासिल करने के लिए तौफीक नसीब फरमाए. सबक का मतलब ये है कि भाई जिंदगी की हकीकत में और आपके सामने, तो दुआ फरमाए अल्लाह इस मरहुमा के अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, इनकी दरजात को अल्लाह बुलंद फरमाए, और उनके आने वाली जो मनाजिल है, कब्र भी एक जिंदगी है, कब्र भी वहाँ पर है. अल्लाह के नबी ने क्या बयान फरमाया, that grave, the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam has mentioned, either that grave can be a pit of paradise or can be a pit of hell also. So let us make dua to Allah, supplicate, let us make mercy to Almighty Allah to fill a grave with nur, to elevate the status and grant a paradise in Jannah. Dua फरमाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन बातों पर अमल करने के लिए तौफीक नसीब फरमाए. I won't take much of your time. Let's pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make it easy for us to practice on what is being said, and we make dua and supplicate in front of Allah that Allah subhanahu wa ta'ala give lot of patience, give lot of sabr to the family. दुआ फरमाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है इस खानदान को अल्लाह सब्र जमील नसीब फरमाए, इनको आपस मोहब्बत नसीब फरमाए, इत्तेफाक नसीब फरमाए.
और ख़ास तौर पर इस मरहुमा की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए कर अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस के अंदर में आला से आला मकान नसीब फरमाए। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. I'll recite few verses from the Quran. After we will make the Masri and we will make supplication inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد